back from outside Theekshana to the right-hander Mitchell. He is content playing in a controlled manner down to mid-off and gets just the one on that. Fakhar Zaman, the fielder, and New Zealand up to 286 for 3. And in this 286, there have been 36 fours and 3 sixes. And there have been 74 singles, 105 dots. Here is Hassan Ali's next delivery. He gets a thick outside edge and runs down to find third man for 4. It's almost that stage of the game. Doesn't matter how they come, so long as they come. Once again, that delivery just back a full in, and not much of room outside the off stump as Mark Chapman fended at it. You don't expect slips at this stage of the game, and at Hassan Ali's pace, it took the outside edge, went through the vacant slip region down to fight third man for 4. Hassan Ali this time to Mark Chapman on the leg and middle stumps, turn round the corner. We'll wait for the umpire signal. Leg byes, yes, it's leg byes as I had suspected. Ends over number 39 with that single. 7 runs in that Hassan Ali over. New Zealand at the end of 39 overs, 291 for 3, close to 7.5 runs to the over. .91 for 3, 7.5 runs to the over New Zealand. Daryl Mitchell is 17, Mark Chapman is 15, and the last over of Shaheen Shah Afridi, a pull that Mark Chapman essayed over here, will be remembered by me for a long time. He was virtually airborne, reached out to that short delivery, managed to control the ball in the air and put it to mid-wicket for 4. Shaheen Shah Afridi this time to Mark Chapman in the air over the heads of mid-off, down to the longer boundary for 4. Literally swatted it away. Back a full length again. Went after it, did Chapman. He's been doing that ever since he came in. Also the slower ball with a scrambled seam. Read it beautifully, waited for it, swatted it away over the mid-off. Inside the 3rd yard, 2 bounces down to long off for 4. Mark Chapman is 19 of 14. What a way to start off an over with the boundary. Exactly what New Zealand want. 295 for 3. 5 away from bringing up the 300. Afridi, this time to Chapman. Plays it in a controlled manner, right to the block hole. That delivery from Afridi. Good ball, good response from Afridi after being clobbered for a boundary. And Chapman is content playing a controlled drive down to mid-off. Gets a run in the bargain. 296 for 3. 10.4 overs remain after this. 64 deliveries to come. And New Zealand are already 296. Yes, they've lost 3 wickets. If they don't lose wickets, we are looking at well above 370 for sure. Much above that as well. Shaheen Afridi, this time to Daryl Mitchell, and he turns it round the corner. Shot lifting delivery on the leg and middle stumps. Just a single down to short fine leg inside the 30 yard. Daryl Mitchell is 18 of 11, and New Zealand 297 for 3. 7.5 their run rate. Even if they go at this rate, they'll end up at 375. They wouldn't want to lose wickets. They will want to look at 400 from now. That's possible. More than 10 overs left over here. Shaheen Afridi, this time to Mark Chapman, who drives it, puts it in the gap to the right of mid-off, down to the wide long off boundary for 4. Mark Chapman is giving it a go freely over here. He knows he's coming at a time when a big partnership was put up between Ravindra and his captain Williamson. They provided the platform.
His job there is to go after it and get runs. And boy oh boy, has he done it so well so far. Just short outside the off stump, got the width and plundered it. Pass extra cover for 4. Shined a freebie this time to Chapman, and Chapman this time whiffs it away to the vacant mid-wicket region. He'll probably get a couple for that, as the return comes in to the non-striking end. Brings up 300 of New Zealand innings, 303 for 3, 7.6, and Chapman is 26. 26 of 17, Mark Chapman. In the last 10 balls, he's got 3 boundaries. Mark Chapman tells you the mood in which he has gotten out there. Just the one delivery left in this sign of free the over. This has been expensive again. 14 runs already, gets a thick outside edge. It's running down to the third man boundary for 4 more. Wanted to play the extra cover drive, got the thick outside edge. Doesn't matter how they come, so long as they come. 4 more to Chapman, 30 years, and at the end of 40 overs, New Zealand are 307 for 3. और बहुत ही आकर्षक मनमोहक बल्लेबाजी चलती हुई न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की। 2 खिलाड़ी जिन्होंने आधार रखा था, रचिन रविंद्र जिन्होंने 108 रन बनाए, केन विलियमसन ने बनाए थे कुल मिला के 95 रन। 40 चौके अभी तक न्यूजीलैंड की पारी में आए हैं। 40 ओवर के बाद 307, 3 विकेट के नुकसान पर रन औसत भी 7.5 रन से ऊपर चला गया है। और यहां से अब किस तरह से पाकिस्तान रोकेगा, ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि मैदान अब सूर्यदेव ने अपनी रोशनी यहां पर दे दी है, पूरी तरह से धूप खिली हुई। और ऐसे में पवेलियन एंड की ओर से नए ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज हसन अली। पहली गेंद बिल्कुल जगह पर खड़े खड़े गेंद को ड्राइव किया था, लेकिन मिड ऑफ पर कप्तान बाबर आजम खड़े हैं 30 यार्ड सर्कल के अंदर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, मिड ऑफ ऊपर लिया है। और अब ये तीसरा और अंतिम पावर प्ले। पहले 10 ओवर में 66 बने थे, दूसरे 10 ओवर में 59, तीसरे में 86 और 31 से 40 ओवर के बीच 2 विकेट जरूर खोए, लेकिन 96 रन बनाए 9.6 रन प्रति ओवर के औसत के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने। हसन अली राइट आर्म ओवर द विकेट, लंबे गेंदबाजी रनअप के साथ इस बार एक और बढ़िया शॉट, फिर से पंच किया, लेकिन कप्तान बाबर आजम को भेद नहीं पाए। 2 बढ़िया बॉल, 2 बढ़िया शॉट। मार्क चैपमैन और डेरिल मिचेल के बीच अब साझेदारी चलती हुई। मार्क चैपमैन ने 30 रन की रन संख्या अर्जित कर ली है, जो विश्व कप में उनकी सबसे बड़ी रन संख्या रहेगी। इसके पहले 25 रन बनाए थे उन्होंने अफगानिस्तान के विरुद्ध चेन्नई में। हसन अली की तीसरी गेंद, और इस बार कोई मौका नहीं बाबर आजम के लिए। बिल्कुल एक जगह पर गेंद हो रही थी, रीप्ले चल रहा था, ऐसा लग रहा था, लेकिन इस बार हसन अली की गेंद को बाउंड्री के बाहर की राह दिखाई। 4 रन लगाए बोर्ड पर, 4 रन अपने खाते में जमा किए डेरिल मिचेल ने। 22 पर पहुंचे हैं डेरिल मिचेल, आकर्षक बल्लेबाज, 2 स्ट्रोक प्लेयर मैदान पर। न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी कर रही है और 311 रन, 3 विकेट के नुकसान पर उनका स्कोर। पहला विश्व कप है डेरिल मिचेल का, हालांकि 32 साल की उम्र है। 36 मुकाबले खेले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, 1371 रन, 130 उच्चतम स्कोर उनका। इसी बीच हसन अली की अगली गेंद, इस बार लिफ्ट किया, बॉलर के ठीक पीछे गेंद जाती हुई, और अंपायर ने अपने दोनों हाथ हवा में खड़े करके इशारा किया कि गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर गई है 6 रन के लिए। 431वां छक्का विश्व कप 2023 का, जिसका आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत के 10 स्टेडियम पर चल रहा है। 35वां मुकाबला, कुल 45 लीग मैच, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल, 48 मुकाबले इस विश्व कप में खेले जाने हैं। 10 टीमें खेल रही हैं और देखना है कि कौन सी टीम वर्ष 2023 में चैंपियन बनती है। 2 बेहतरीन शॉट, एक दूसरे को बधाई देते हुए डेरिल मिचेल और नॉन स्ट्राइकिंग एंड से आगे की तरफ आए चैपमैन। बिल्कुल 30 गज के लाइन से दौड़ रहे हैं बॉलिंग के लिए। हसन अली लंबा बॉलिंग रनअप, 8.4 ओवर, 70 रन, 1 विकेट। हसन अली की यह गेंद अच्छी गेंद,
वुडलैंड पिच होने के बाद तेजी के साथ स्टंप की तरफ आई ऑफ साइड पर। How often, Damodar, does one see a bowler of Hasan Ali's pace being topped over the bowler's head for a six? That tells you the mood in which the two New Zealand batters are. Also tells you the confidence which they are carrying right now. जी हाँ, और देखना है हसन अली किस तरह से अब बदला चुकाते हैं। 317 पर 3 न्यूजीलैंड। बार शॉर्ट गेंद 2 टप्पे के बाद लॉन्ग ऑन के फील्डर की तरफ पहुंचती हुई। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे हैं फखर जमा, जिनके पास बहुत देर बाद गेंद आई। और इस 1 रन के इजाफे के साथ ओवर भी पूरा हुआ। 41 ओवर के बाद 318, 3 विकेट के नुकसान पर। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को एक बार फिर से हम बता दें कि 2 बजे से दूसरा मुकाबला आज के दिन का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में प्रारंभ होगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। ऑस्ट्रेलिया इस समय तीसरी पायदान पर है। 6 मैच में 4 जीत 2 हार, 12 पॉइंट्स उनके खाते में। नीदरलैंड के विरुद्ध एक बहुत करारी हार उन्हें मिल गई थी जो उन्हें सोने नहीं दे रही है। और दूसरी तरफ बेताज बादशाह 2019 का चैंपियन इंग्लैंड 10वें स्थान पर चल रहा है। 6 मैच खेले हैं, केवल 1 जीता है और 2 पॉइंट के साथ में 10वें नंबर पर। और जैसा के बता ही चुके हैं कि यदि न्यूजीलैंड इस मैच को जीतता है तो श्रीलंका, नीदरलैंड, बांग्लादेश, इंग्लैंड की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। और अब 42वें ओवर की शुरुआत। डेरिल मिचेल 29 रन पर सामना करेंगे गेंदबाज हारिस रऊफ का। एक बार फिर से एंड चेंज किया। पहली गेंद बोल्ड। डेरिल जोसेफ मिचेल को बोल्ड किया हारिस रऊफ ने। एनसी एंड की ओर से गेंदबाजी के लिए आए थे। 42वें ओवर की पहली गेंद विकेट देकर गई है। पहला विश्व कप, लेकिन अच्छा विश्व कप। 130 रन धर्मशाला में बनाए थे डेरिल मिचेल ने भारत के विरुद्ध 22 अक्टूबर 2023 को। और आज भी आकर्षक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तेज गति की जो बल्लेबाजी थी वो और ज्यादा आगे नहीं ले जा पाए। 18 गेंदों पर 4 चौके 1 छक्के की मदद से 29 रन बनाए 161.11 के स्ट्राइक रेट के साथ। डेरिल मिचेल बोल्ड, हारिस रऊफ 29 और न्यूजीलैंड 41.1 ओवर में 318, 4 विकेट के नुकसान पर। दोनों टीमों की बात की जाए तो दोनों टीमों के बीच कुल 115 मैच खेले गए हैं। इसमें न्यूजीलैंड ने 51 मैच जीते। पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। 60 बार उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया है। 3 मुकाबले का कोई निर्णय नहीं आया और 1 मुकाबला दोनों के बीच टाई के रूप में संपन्न हुआ था। और यदि विश्व कप की बात करें तो 9 मैच में पाकिस्तान ने 7 बार न्यूजीलैंड को हराया है। न्यूजीलैंड 2 बार पाकिस्तान को हरा चुका है। लेकिन पिछले विश्व कप में जो मैच खेला गया था वो इन दोनों के बीच विश्व कप का अंतिम मुकाबला था। 26 जून 2019 को बर्मिंघम में बाबर आजम के शतक के सहारे पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को पराजित किया था। और यहाँ मिड ऑफ मिड ऑन ऊपर कोई स्लिप नहीं, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक थर्ड मैन, डीप पॉइंट, कवर्स और मिड ऑफ। ये ऑफ साइड पर 5 फील्डर, ऑन साइड पर मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग। इस फील्ड के साथ गेंदबाज हारिस रऊफ अपनी दूसरी गेंद के साथ इस ओवर में। पहली गेंद पर विकेट। बैटिंग के लिए आए हैं अब डेरिल मिचेल के स्थान पर फिलिप्स, जिन्होंने पहली गेंद को बहुत आराम से खेला। शॉर्ट मिड विकेट की तरफ कोई रन नहीं इस गेंद पर। और देखना है अभी भी जो स्कोर है, जो लक्ष्य देख रहे हैं 350 के ऊपर का, क्या न्यूजीलैंड के बल्लेबाज वहां तक पहुंच पाते हैं या नहीं। मिड ऑन पर शाहीन शाह अफरीदी, जिन्हें थोड़ा सा पीछे कर दिया है कप्तान बाबर आजम ने। जी नहीं, वापस उन्हें 30 सर्कल में ही बुला लिया है। हारिस रऊफ राइट आर्म ओवर द विकेट, एनसी एंड की ओर से इस ओवर की तीसरी गेंद। बहुत बढ़िया गेंद, गुड लेंथ पिच होने के बाद तेजी के साथ स्टंप की तरफ आती हुई 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद। आज रफ्तार बहुत अच्छी दिखाई है पाकिस्तान के गेंदबाजों ने। विशेष रूप से हारिस रऊफ की बात करें, जो अनुभव उन्होंने दिखाया अपनी गेंदबाजी में वो बहुत बढ़िया था। और एक विकेट आज उनके नाम पर आया है। हारिस रऊफ का यह 8वां ओवर चल रहा है। 59 रन देकर 1 विकेट लिया। हसन अली, इफ्तिकार और मोहम्मद वसीम को भी 1-1 विकेट मिला है। पारी का 42वां ओवर।
318 पर 4। और इस बार खराब गेंद, ग्लांस किया फाइन लेग बाउंड्री पर, काफी फाइन गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और जैसी मैं बात कर रहा था, स्पीड तो बहुत है, 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद, लेकिन यदि आप पैड पर गेंद रख देंगे तो फिर उसके साथ क्या बल्लेबाज करेगा ये उसे ही मालूम है। आराम से गेंद को खेल दिया, ग्लांस किया, फाइन लेग पर चौका हासिल किया और स्कोर में और बढ़ोतरी की। 322 रन 4 विकेट। ग्लेन फिलिप ने अपना खाता खोला इस चौके की मदद से। दूसरे सिरे पर मार्क चैपमैन खेल रहे हैं 30 के व्यक्तिगत स्कोर पर, और अब मिडॉन का फील्डर बाउंड्री लाइन पर भेजा जा रहा है शाहिनशाह अफरीदी को। 4 फील्डर सर्कल के अंदर, 3 ऑफ साइड पर, 1 ऑन साइड पर। हारिस रऊफ थोड़ा सा ओवर पिच गेंद, मिडिल और लेग स्टंप पर, जिसे फ्लिक किया था, लेकिन गेंद सीधी शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर के पास गई। 144-145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंदें हारिस रऊफ की, जो रन नहीं बनाने देती, लेकिन यदि दिशा से भटकते हैं तो फिर उसके बाद उन गेंदों पर चौके की छाप जरूर बल्लेबाज लगा देता है। 7.4 ओवर 63 रन 1 विकेट, 7.5 ओवर में 63 रन देकर 1 विकेट। ये गेंदबाजी है हारिस रऊफ की, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। रऊफ के ओवर की अंतिम गेंद, ओवर पेच, हाफ वाली पर ड्राइव किया, स्वीपर कवर बाउंड्री पर 4 रन। और मैं वही बात कर रहा था कि यदि आप अपनी स्पीड को मेंटेन करेंगे लेकिन लाइन लेंथ उतनी अच्छी नहीं रखेंगे तो फिर आपके विरुद्ध बल्लेबाज क्या करेगा वो ही जानता है। तीसरा चौका इस ओवर का। ग्लेन फिलिप बल्लेबाजी के लिए आए, मौका मिला, अपने हाथ खोले और निरंतर रन बनाए अपनी टीम के लिए। 30 पर खेल रहे हैं चैपमैन और कुल स्कोर है 326, 4 विकेट के नुकसान पर। ग्लेन फिलिप 8 पर 2 चौके उन्होंने लगाए और मार्क चैपमैन खेल रहे हैं 30 पर, 18 गेंदें उन्होंने खेली हैं। तो 42 ओवर और जो करंट रन रेट है वो 7.76, क्योंकि जो करंट रन रेट वो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन है। विकेट गिरे लेकिन कोई प्रेशर नहीं आया और ना ही रन रेट नीचे जाने दिया है न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने। इसके लिए उनकी तारीफ जरूर बनती है। Yes, they've kept the momentum. They lost Darren Mitchell, but they're keeping up the momentum, which is the right thing to do. You've got 3-2-6 on board already. First ball for Fresho, and it's flicked away down the corner. It might be cut off inside the long leg boundary. A diving attempt over there. Doesn't quite succeed. A good attempt, but carries down to the boundary. Ricochets of the fielder there was Shine Afridi down to the boundary for 4. But again over there, Hassan Ali erring in line, bowling on the pads. That's cannon fodder for batters in this mood. They picked their spot, rolled as he did, and even though a grand attempt was made, it was down to the boundary for 4. Hassan Ali once again, that's lofted, one dropped, it'll go down to long on for a run. 331 for 4, 5 runs already in 2 deliveries of this over from Hassan Ali. Mark Chapman in a punitive mood, 35 of 20. Really played some great strokes. That pull in the air, as I said earlier, of Shine Afridi a couple of overs back. He was airborne, jumped in the air. That was a fast bouncer, reached out, but controlled that pull so beautifully and deposited a couple of boundaries to mid-wicket for 4. This is Phillips now. Hassan Ali to Phillips, and he plays it in a controlled manner down to long on for a run. He'll be 9, and New Zealand 332 for 4. The current run rate 7.8. New Zealand will certainly look upwards of 400 now. This is a ground where big chases have happened. A lot of runs, short boundaries, but even then, chasing down 400 will be daunting. There will be scoreboard pressure. It's not a small total when you put up 400. Shorter length, and that's been pulled away, but he picks on the fielder at long leg. Iftikhar Ahmed gets just the one, does Chapman. He's 36 of 21. Good variation there from Hassan Ali. The slower short delivery, sure bouncer.
And that's why Chapman had to wait for it. Couldn't use the pace on that one, being the slower ball. But played it astutely down to the long leg for a run. No dot balls are being conceded by the batters, as would be the order to them right now. Score of every delivery. Here is Hassan Ali. This time to Glenn Phillips. Shorter length once again. He's put it in the gap at mid-wicket. They take one and they take a second fumble. This is what you can do when you put pressure on the fielders. Shout Shakil has been one of the better fielders for Pakistan out there in the outfield. He's prevented at least 2 or 3 boundaries that come to my mind. Now, when Phillips played that beautifully in the gap, he ran the first early, created the opportunity for the second, created pressure on Shout Shakil as he was on brushing on that mile, and fumbled in the process. Not just 2 but 3 were conceded. Hassan Ali's next delivery is put out on the onside. This time a good return coming in. They go across for a run. Phillips is 12. Chapman is 37 of 22. At the end of 43 overs, at 7.84 to the over, New Zealand 337 for 4. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. For 43 overs, 337 for 4. What an excellent example of putting pressure on fielders over there. When Glenn Phillips played that on drive, timed it beautifully, played it to perfection, ran the first hard, created the opportunity for the second. South Shakil was under pressure. He fumbled. They ran the second. And because of that fumble, the ball travelled about 5 to 7 feet. And they got 3 in the bargain. This partnership is 19 of 11. It's been all partnerships. 180 of 147. Rachin, Ravindra and Williamson stands out in this innings. Here is Haris Rauf. This time to Mark Chapman. And should be called a wide. Yes, it is. Umpire Wilson, no hesitation. The moment it went down the leg side, we knew it was a wide. Haris Rauf, 1 of 68 of 8 overs. 8.5 to the over. They've all bled runs, except Mohammad Wasim, who's gone at around 5.5 and over. All the Pakistani bowlers have gone at over 6.5. 22 extras in this innings so far conceded by Pakistan, of which 15 have been wides. And when you bowl 15 wides, you give 15 runs and 15 additional deliveries. And the New Zealand batters have been punitive and scored boundaries on many of them. Haris Rauf this time to Mark Chapman. Much better ball. Jacks back into the left-hander from outside the off stump. They go through for 1. Chapman wants a second. And Glenn Phillips says no, they get just a run. There's another game going on with England and Australia. Australia put in the bat are 2 for no loss. And in a short while from now, we will take you across to the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad for live commentary from there. That's another crucial game going on. Australia need to win that one. Just to remind listeners, you tuned in late. If New Zealand and Australia win, Pakistan, England, Sri Lanka and Netherlands are out of contention for the semi-finals. That is if New Zealand and Australia win their respective games today. New Zealand going well at 340 for 4. Lot of cricket to be played over here at the Chinnaswamy. And Australia put it to bat by England. The next delivery from Haris Rauf is pulled away down to long leg for a single. Australia now 8 for no loss currently. Here is Haris Rauf. New Zealand 340 for 4. This time to Chapman, and that's a good ball right to the block hole. Wraps him on his pads. Ricochets on the offside for a run. Leg by, says umpire Wilson. So just 4 runs in this over so far. Haris Rauf has bowled many overs where he started off well
conceding 3 to 4 runs in first 3 or 4 deliveries and then got tonked in the 5th or the 6th delivery. What will happen in this over? Phillips 13 of 8 deliveries. 3 deliveries remain. Here is Haris Rauf into Glenn Phillips, and that's played in a controlled manner down to mid-wicket. No runs result, a dot ball again. So a good over in the context of the game. The kind of clobbering we've seen in the last few overs. If you see just 4 runs of the first 4 deliveries, you believe that's a good over. Haris Rauf readjusting his field. Wants the long leg to come inside the 30-yard circle. Finer that too. Somewhere around the final leg position. Inside the 30-yard. The square leg. The mid-wicket being pushed to backward square leg. And the wide mid-on being pushed to orthodox mid-wicket. All boundary riders. Haris Rauf to Glenn Phillips, and Glenn Phillips plays it into the covers. They run for 1. Continues to be good over this one, including the wide, just the 5 runs. Well, Haris Rauf ended well. 7.8. New Zealand going very well. Chapman, 38 of 24, will take the last delivery of Haris Rauf. 43.5 overs, 342 for 4. Haris Rauf so far has gone for over 70 in his spell. 1 for 71. Last ball of his 9th over. Haris Rauf this time to Chapman, and Chapman has driven bowler's back drive but will be cut off by an on-rushing fielder from long off. Just the one. A good over in the context. 1 for 72 of 9 overs. Haris Rauf at the end of 44 overs. 343 I make it for 4. New Zealand as we take you over to Ahmedabad for live commentary. Australia are playing England there at the Narendra Modi Stadium. नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद से मैं आपका कमेंटेटर विनीत गर्ग बोल रहा हूं और अपने साथी कमेंटेटर सुनील गुप्ता, किशोर लवने, स्कोरर और स्टैटिस्टिशियन तुषार त्रिवेदी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया मैच यहां पर खेल रहा है इंग्लैंड के खिलाफ। टॉस जीता इंग्लैंड ने और सबको चौंका दिया। उन्होंने पहले फील्डिंग करने का 35 डिग्री सेल्सियस में। मैच का दूसरा ओवर चल रहा है जो कि वोक्स कर रहे हैं। 2 लेफ्ट हैंडर्स क्रीज पे। हेड लगातार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को छेड़ रहे हैं। क्या विकेट कीपर के पास यह गेंद जाएगी? और खुद ब खुद पलट कर जा रहे हैं। पिछली गेंद पर भी यही गलती की थी। एक बाउंस होती हुई आउट स्विंगर लेफ्ट हैंडर के लिए और वोक्स बहुत अच्छा पिच का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोबारा वही गलती की जो पहली गेंद पे करने की कोशिश की थी और इस तरह से 11 के स्कोर पर हेड का विकेट जिन्होंने कि पिछले मैच में शतक लगाया था खो दिया है और इंग्लैंड को टॉस जीतकर सफलता जल्दी मिल गई है। हेड आउट होकर वोक्स की गेंद पर जा रहे हैं जो कि कमेंट्री बॉक्स एंड से बॉलिंग कर रहे थे और विली जिन्होंने पहला ओवर किया था उनकी तुलना में ज्यादा स्विंग मिल रहा था। एक वॉबल सीम से ऑफ स्टंप के बाहर पे अपनी जगह खड़े खड़े बल्ला अड़ाया, किनारा लगा और विकेट कीपर के ग्लव्स में वो गेंद चली गई। क्या इस तरीके की स्थिति है और 11 रन के स्कोर पर 1 विकेट गिर गया। ट्रेविस हेड कॉट रूट बोल्ड वोक्स 11 रन 10 गेंदों के बाद उनका 11 रन का है। और स्वागत कर लेता हूं तुरंत सुनील गुप्ता, क्या कहना चाहेंगे आप? Thank you very much, Vineet. Yes, good afternoon, namaskar. To a stadium that we walked in looked very different from the one that we'd seen earlier because it was like a red planet. Hardly anybody in, but there's a smattering of people now, people with the Warner and Head and Smith t-shirts on from Australia. And of course, you'll always see Virat Kohli and Rohit on the blue t-shirts. But England picking up a very, very good wicket. That of Travis Head going too often to the well, pushing outside the off stump and getting a nick to Joe Root, taking it very well. Waist high at first slip. So Chris Woakes with first blood. And who knows, England now playing for pride. And they're going to be having 2 slips now. And Steve Smith coming in at number 3. स्टीव स्मिथ को टेस्ट मैच जैसी बैटिंग करनी होगी। लाबुशेन और टीम स्टीव स्मिथ दोनों है। 2 स्लिप तैयार हैं। स्मिथ राइट हैंडर, वोक्स की गेंद बहुत
तेज गेंदे कर रहे हैं वोक्स। इस विकेट ने टॉनिक का काम किया होगा। 133 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की ये गेंद थी और इंग्लैंड उम्मीद थी कि इस गर्म वातावरण में आमतौर पर जो वानखेड़े में उनके साथ हुआ था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, तेज धूप में, उमस में, क्योंकि यहां भी तापमान लगभग 34-35 डिग्री के आसपास है, उमस लगभग 35 डिग्री की है और मैदान जहां से हम कमेंट्री बॉक्स जहां बना हुआ है वहां से हवा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नॉर्थ एंड से चल रही है और इस बार कोई बहुत अच्छे अंदाज में नहीं खेला। हालांकि रन मिल जाएगा, गेंद कवर्स में जा रही है, 2 खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहे हैं, आउटफील्ड कोई बहुत तेज नजर नहीं आ रही है। एक और रन, 1 फॉर द थ्रो और उसमें दौड़कर पूरा रन कर लिया। तीसरा रन के लिए पलट कर आ गए हैं। हालांकि आउटफील्ड कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं थी। इस तरह से विली ने पहले ओवर में 9 रन दिए और 14 रन 1 विकेट। दूसरे ओवर की समाप्ति में वोक्स का ये दूसरा ओवर, पारी का उनका खुद का पहला, पारी का दूसरा ओवर स्क्वायर ऑन हो गए थे। ओपन हेम आप लेके कैन ऑफ बीन्स और किनारा लगा और स्वीपर कवर की तरफ चली गई और रन जरूर मिले थे, लेकिन 14 रन 1 विकेट पर दूसरा ओवर समाप्त हो गया। और बुला लेता हूं सुनील गुप्ता को। Yes, that was a very, very good delivery from Chris Wokes. It squared him up, as Vineet said, got the outside edge, the leading edge, and flew way down towards backward point. And it's a very big outfield here, very big ground here at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. Much bigger than the Chinnaswamy at Bengaluru, where the other game is being played. New Zealand taking Pakistan to the cleaners of there, as you must have heard. So 14 for 1, Smith coming in and getting off the mark virtually immediately. Here goes left arm swing bowler David Willey, comes in and bowls, and once again an excellent delivery, just short of the length, and onto the back foot goes Smith. And plays him rather awkwardly, but eventually getting it down the wicket for Willey to pick up on his follow through. 14 for 1 as the crowd start coming in. Just a few people coming in now, but still vast areas that are empty. It's very hot, as Vineet said, and I guess maybe if they get Australia out for a lower score, then when the chase comes in, you'll get a bigger crowd coming in. Here goes Willey then. Comes in and bowls, and this one taken right off the stumps, the way that he normally does. Steve Smith walks right across. This is left arm over, remember, not right arm over. Left arm over, it still takes it off the stumps down to square leg and picks up a single. Here we are in the city of Ahmedabad, very much like the weather that we had previously. Very much like the weather that we had previously in the India-Pakistan game. But as I said, the crowd's building up. Now for this, England, really they're at the bottom of the table, and for them to win is a matter of pride. Just tell you what their stats are in World Cup so far. They've played Australia 10 times, and Australia has won 6 times, and only 2 won by England. Break off, here goes Willey. Left arm over and bowling for left-hander David Warner. We've seen a couple of Warner t-shirts in yellow on the ground, and squirts it away to backward point, but there is no run. 15 for 1, so good strike right at the beginning. Travis said he can be absolutely dangerous. I saw him at the Oval when India were playing the World Test Championship final. He absolutely slaughtered the Indian bowlers over there, as well as slaughtered the New Zealand ones when he was playing in Dharamshala. But nevertheless, here goes Willey now from the far end. 2 slips waiting for David Warner, because there is a little bit slightly slow delivery inside edge onto the pads and then squirts away towards where second slip is, and there's no run. Much better over anything that's short and wide beneath to David Warner. He is going to slash you away, as we saw in the first over. Time adjusting his radar a bit, David Willey, and bowling on the stumps. और बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग की है। पिछली 3 पारी अगर आप देखें, 81 न्यूजीलैंड के खिलाफ, 104 उन्होंने बनाए और उससे पहले 163। तो लास्ट 3 इनिंग्स 163, 104 and 81. And that's why you can see the t-shirts in the crowd. This one is driven, but straight to the man, for the picked up there by Moeen Ali. Man, it went at the rate of knots, but straight to him. A yard either way, and that would have gone to the boundary. But you could see that David Warner is up for the fight. But so are England. I can see a slightly different body language in them than one saw in the earlier games. A couple of the earlier games, especially the one against South Africa, they look completely lost, bereft. But over here, they look as if they're really up to it, especially that early wicket, a big tonic in any form of the game. And a little bit more bounce in this wicket.
And this one, once again, slightly slower through the air. Drives it back and he gets a hand on it, prevents the ball from going through. So an excellent over, just the one run in it. And at the end of 3 overs, Australia are 15 for 1. मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। तरह से ये खेल चल रहा है। शुरुआत में, पारी की शुरुआत में तेज बॉलर्स को कुछ मदद मिलनी ही चाहिए, वही आदर्श विकेट होता है और निश्चित रूप से वोक्स अच्छा खासा परेशान करते रहे हैं। और देखें कि वो किस तरीके की बॉलिंग करते हैं। इनटू द पिच बॉलर है। 1 विकेट उनको मिला, हेड को जल्दी आउट करने में सफलता मिली और पहला विकेट खो चुका है ऑस्ट्रेलिया, जो कि मजबूरन 2 खिलाड़ियों को परिवर्तित करने में मजबूर हुआ है। मैक्सवेल टीम में नहीं है और मार्च घर वापस गए निजी कारणों से। उनकी जगह कैमरॉन ग्रीन खेल रहे हैं। इस बीच ये गेंद और उसको लेग स्टंप के बाहर की है गेंद, डिफ्लेक्ट करने किया, वहां पर थोड़ी सी गफलत हुई। विकेट कीपर को अपनी तरफ लंबा रास्ता तय करना था, बिल्कुल पीछे साइड स्क्रीन की तरफ दौड़ कर गए, लेकिन तब तक पलट कर एक और रन के लिए आ रहे थे। तीसरा रन भी पूरा कर लिया। थोड़ा लेग स्टंप पर डिफ्लेक्ट किया था उस गेंद को, गेंद की रफ्तार का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। लेकिन टीम में जहां तक परिवर्तन का सवाल है तो कैमरॉन ग्रीन आ गए और स्टोइनिस भी टीम में वापसी कर रहे हैं मैक्सवेल और मार्च के स्थान पर। मार्च जिन्होंने खासे रन किए थे, 18 रन 1 विकेट पर। ये चौथा ओवर चल रहा है। हेड को सस्ते में खो दिया है ट्रेविस हेड, कॉट जो रूट, बोल्ड क्रिस वोक्स। 11 रन 10 गेंदों पर 1 चौके की मदद। एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, एक घुटना झुका के पैड को नीचे टिकाकर उन्होंने लगाया था और जहां पे वो स्ट्रोक लगाया था मैदान की सबसे बड़ी बाउंड्री है वो, और उस जगह 73 मीटर की बाउंड्री है। आप समझ सकते हैं, द लॉन्गेस्ट बाउंड्री ऑन द ग्राउंड। स्क्वायर बाउंड्रीज यहाँ छोटी हैं, 67 और 68। मैदान पर 11 पिचेस हैं, तो सेंटर पिच कभी भी नहीं हो सकती। एक